with UGC HRDC and taking up the session on the mechanics of writing. So thank you so much for this opportunity and good afternoon once again to all the participants who are here. We are going to have a very interesting session. So I'm sure please keep yourselves ready for interaction because your interaction is very, very important. So first of all, the topic today, it talks about the mechanics of writing. So mechanics or writing का क्या connection हो सकता है? Mechanics is something which is usually with science. Mechanical engineering है, आपकी कोई vehicle के mechanics हो सकता है, कुछ भी चीज का, it is something to do with science. So मैकेनिक्स और राइटिंग में क्या कनेक्शन हो सकता है? एनीबडी थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो तो यू कैन प्लीज शेयर कि मैकेनिक्स क्या, राइटिंग और मैकेनिक्स में क्या कनेक्शन हो सकता है. प्लीज फील फ्री टू रिस्पॉन्ड. You can unmute yourselves. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, you are Okay. audible. So प्लीज कुछ भी आपको अगर लगता होगा कि राइटिंग के मैकेनिक्स क्या हो सकते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कि व्हाट कुड इट बी. It may be, if I am talking about English, it may be the use of punctuation, the use of semicolons and commas, and how to put forward sentences in active as well as passive voices, depending upon the sentence, what it is trying to convey. That will be the mechanics. Absolutely, the technicalities in language. So the technical aspect, the technical writing, because you प्रोफेशनल्स, आप एजुकेशन वर्कफोर्स और आप एक टेक्निकल पेपर लिखने जा रहे हैं विच इज योर रिसर्च. तो टेक्निकल पेपर राइटिंग इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम what we do on a normal basis. जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं या हम किसी को सिंपल मैसेजेस भेज रहे हैं तो दे कुड बी कैजुअल. सो वो हमारा कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो जाता है. बट व्हेन वी आर राइटिंग अ समथिंग फॉर प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट, आप उसके लिए तो वो हमारा टेक्निकल पेपर हो जाता है. एंड these are the technicalities of writing. So you have to be very clear with punctuation, like sir rightly shared. Punctuation की इतनी छोटी छोटी चीजें हैं which usually go ignored. So through this paper we are going to understand what are those little things that we have to bear in mind, because it is all about expression. Writing is all about expressing yourselves, and आप अपने आप को जब express कर रहे हैं तो the person who is reading your paper has to understand what you are expressing. So these little punctuation marks bring about a lot of difference in what you are trying to communicate, and that is why they become very relevant and very important. Of course, we won't be touching upon active and passive voices, but we are going to be touching upon clauses. So understanding how this English language is made up and what are the little details that we have to always be careful about whenever we are writing or talking or even when reading. I'm sure you will become more observant now how these are coming into practice. So we will start with the mechanics of writing. Anything, जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए. लैंग्वेज के अगर हम उससे देखें, लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव से अगर देखें तो मेरी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, मेरी भाषा में क्या क्या मुझे ध्यान में रखना चाहिए. तो कोई भी बता सकता है, कोई भी भाषा, आप अगर मराठी में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, भाषा कोई भी हो, पर ये जो फीचर्स हैं ये आपके हर भाषा में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाएंगे. तो कोई भी आंसर कर सकता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. I'm very I feel very strongly about languages. So आप जब लिखने बैठते हैं तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज में सबसे पहले क्या होना चाहिए?
ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरा पेपर है, तो सबसे पहले what are the things I should be careful about? Anybody? Be grammatically correct. It should be grammatically correct, absolutely, and There should be logical sequence of the sentences, absolutely, yes, yes, and and the syntax of the sentence. there should be logical sequence of sentences and they should be interconnected. Interconnected. So logically, though, of course, I can write one sentence after the other, but whether the paragraph is making a complete, wholesome picture or it is, conveying an incomplete message. So that interconnectedness in a paragraph is extremely crucial. So आपके पैराग्राफ में, आपकी राइटिंग में, और जैसे हम लिखते हैं तो छोटे छोटे पहले सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस से हमारा पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ आपका एक आइडिया कन्वे कर दिया। तो आपकी बुक्स में भी ऐसे ही है कि जैसे एक आइडिया कन्वे हो गया, उसका एक मेन आइडिया हो गया, एंड देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ विल हैव अनदर मेन आइडिया। तो ये जैसे ही आइडियाज चेंज होते हैं आपका पैराग्राफ चेंज हो जाता है। और जब काफी पैराग्राफ से आपके संपूर्ण थॉट प्रोसेस को कन्वे कर देते हैं, दैट बिकम्स योर आर्टिकल। तो आप अगर आपको बहुत ध्यान रखना है आपका इंटरकनेक्टेडनेस, आपका लॉजिकल सीक्वेंसिंग, आपकी क्लैरिटी, आपकी वोकैबुलरी, आपकी स्पेलिंग, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आपका जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये सब बहुत करेक्ट अगर चल रहा है तो आपको खुद ही लिखने में बहुत मजा आएगा और पढ़ने वाले को पढ़ने में भी उतना ही आनंद आएगा। बिकॉज राइटिंग इज समथिंग विच इज लाइक आई एम नॉट राइटिंग फॉर माई सेल्फ, I'm writing so that the other person can read what I have written. And if I have enjoyed writing, the other person is going to enjoy reading it too. So that is why it is, I have to take care of all these little details. So we will just see what are the things. तो मैं आपको आज लैंग्वेज के हम ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो बहुत बेसिक है, बट हो सकता है कभी किसी ने शेयर ही नहीं की। जैसे साउंड इंग्लिश में क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? इंग्लिश में दो टाइप के साउंड्स होते हैं, तो वो दो टाइप के साउंड्स क्या हैं? एनीबॉडी? Consonants and vowel sounds. हाँ, और हिंदी में क्या होते हैं? Varna. वर्णमाला तो पूरा हमारा कलेक्शन ऑफ जो हमारे उसमें लेटर्स होते हैं, For अक्षर and होते हैं। Vyanjan. हाँ, For and स्वर Vyanjan. और व्यंजन। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि हमारे को स्वर को अलग और व्यंजन को अलग, या कॉन्सोनेंट्स को अलग और वॉवेल्स को अलग क्यों रखा गया है? व्हाई दिस डिस्टिंक्शन? इतना लाइफ को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट क्यों किया? अगर एक ही ब्रैकेट में सब रख लेते तो लाइफ कितनी इजी हो जाती। पर ये स्वर, व्यंजन, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब क्या है, क्यों है? किसी ने कभी सोचा है? What is the difference? वॉवल्स ही क्यों कहलाते हैं? कभी कभी वॉवल्स का साउंड कॉन्सोनेंट्स जैसा हो जाता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट्स का साउंड वॉवल्स जैसा हो जाता है। तो ये साउंड बिजनेस है क्या इंग्लिश में? और ये हमें समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसी साउंड्स के कारण हमारी स्पेलिंग बनती है, और वो स्पेलिंग को अगर समझना है तो हमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर की अगर बेसिक यूनिट समझनी है तो वो है साउंड, ध्वनि। क्योंकि हर चीज साउंड से शुरू हुई है, पहले ध्वनि आई है, लिखना तो बाद में आया होगा ना हर चीज। तो साउंड्स को समझते हैं तो सबसे पहले तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का ही डिफरेंस समझते हैं, और वही डिफरेंस स्वर और व्यंजन में भी है। तो जब हम किसी भी स्वर को बोले या किसी भी वॉवल को बोले तो हमारे जो साउंड बनता है, जैसे आप ए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आई ओ, तो इसमें आपकी आवाज सीधे
डायरेक्टली बाहर आ रही है। आप ना तालू पे आपकी जुबान लग रही है, ना आपके दांत खींचे जा रहे हैं, ना आपके लिप्स टच हो रहे हैं, बस वो सीधे वोकल कॉर्ड से साउंड बाहर आ, दैट्स अ वॉवल साउंड। सो ये वॉवल साउंड में योर वोकल कॉर्ड्स से एयर इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू। सो इसीलिए ऑनेस्ट में एच का साउंड जब ऑ हो जाता है तो वो एक वॉवल साउंड हो जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू साउंड में आपका टंग हैज रोल्ड, सो इट इज नॉट अ वॉवल साउंड, बट अम्ब्रेला में अ इज एन वॉवल साउंड। So are you getting the difference between what is a vowel sound and what's a consonant sound? Vowel sound में आपकी आवाज से throw सीधे बाहर जाएगा, और consonant sound में there is going to be some interaction with your teeth or tongue or jaw or palate anywhere. कुछ interruption है, उसके बाद ध्वनि बाहर आ रही है. That is the basic difference between the vowel sound and the consonant sound. Are we clear with this? Yes, ma'am. Yes? Are we Yes, ma'am. clear? And whatever we are understanding here, please share with your, आप अपनी writings में तो इसको लाएंगे ही, आप बाहर भी इनको दूसरों के साथ share कीजिए, so that you know more and more people get to know about it. So I'm going to start with my presentation. Let me know if my screen is visible. Is my screen visible? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. It's visible. Okay, Very I'll clear. just start with uh, just a minute. Let me start with screen share screen. Yes, slideshow. Okay. Okay. So this is the first slide. We are going to be understanding, और आपको sound से related जो भी questions हो, आप पूछते रहिए, सोचते रहिए, and if you can really get on that, you know, inquisitive mode, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो it will be really wonderful, and I would try to answer as many questions as I can from my side. So writing mechanics, जैसे हमने कहा, these are the technical aspects of writing. So what do you take care of? You take care of spelling, you take care of punctuation, you take care of capitalization. Research articles में heading कैसे लिखी जाती है? Capitalization तो हमने बचपन से सीखा है, capital letters, small letters, but writing a heading, थोड़े से technicalities वहाँ भी हैं. And then your quotations and hyphens and italics, all these things. So why are these important? अब आपका जैसे आपने कहा कि लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स, सो दैट इज, अगर आपका लॉजिकली कोई भी चीज प्रोग्रेस हो रही है तो आपका अटेंशन स्पैन वहां पे थोड़ा सा मेंटेन रहता है. यू आर रीडिंग अबाउट समथिंग, एंड इफ देयर इज समथिंग something crops up which is not at all connected, it is not logical, it is incoherent, coherence है ये. तो अगर वो कोहेरेंट नहीं है तो आपका लॉजिकल इज कोहेरेंट, समथिंग व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिबल. एंड बट इफ इट इज समथिंग व्हिच इज you know, you have slipped, you have not understood the meaning, so what is going to happen? There's going to be disruption, और आपका थॉट प्रोसेस डाइवर्ट हो जाएगा, और आपको एम्बिग्विटी, वहां पे फिर क्लैरिटी मिसिंग हो गई, और क्लैरिटी मिसिंग हो गई तो फिर एम्बिग्विटी आ गई, और एम्बिग्विटी आ गई तो मीनिंग इज लॉस्ट. जो मीनिंग था वो मीनिंग कहीं खो गया और कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकल गया. तो जो मैं लिखना चाह रही थी वो मीनिंग पहुंचा ही नहीं दूसरे पर्सन तक, और उसने कुछ और समझ लिया. एंड देन because this is there is ambiguity, there is miscommunication, so I have failed as a communicator to express myself in the right way. So very important कि हमारा लिखने का पैटर्न ऐसा हो कि जो clearly understood हो सके. There is no room for vagueness, for ambiguity. And when we are following all these rules, then the thoughts are being conveyed in the right manner,
And when the thoughts, like I said, comprehension will become easy. And mental friction, because suddenly you are reading something and then you stop. Oh, could it be this? Could it be that? So that is the mental friction. So that will, and what will happen? It will slow down your reading pace. आपकी ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगने के बाद फिर आपका अटेंशन भी शायद वहां से हट जाएगा. सो इंटरप्रिटेशनल एरर हो सकता है अगर आपका एम्बिग्विटी या वीकनेस है. तो इसलिए ये सब चीजें हमें बहुत क्लियरली राइटिंग में मेंटेन करके चलनी है. And it is a powerful tool for clarity, because if there is no clarity, then there is no point in like even if you are writing pages and pages, but if the clarity is missing, then it loses everything. It loses the content, it loses the key feature. So clarity चाहिए, coherence चाहिए, cohesion. So coherence is the logical sequencing, जैसे मैम ने कहा. Cohesion क्या है? Cohesion is the interconnectedness. So जो आपका logically जो आपके sentences चल रहे हैं वो connected भी रहें एक दूसरे से, वो आपका cohesion का काम करता है. And it has to be correct also, consistent also, your vocabulary has to be good, and your grammar has to be powerful. All these features, when they are in place, you are writing a good research article. So coherence and cohesion ka example we are going to be seeing tomorrow. I'll show you some writing where you'll tell me कि ये coherent है, उसमें cohesion है कि नहीं है, whatever. Like you can just see for yourself what we are discussing today. So basics of writing. Is this clear till now? Everything? Any questions? Anything? आप अगर कुछ भी raise करना चाहते हैं, आप यहाँ पे question पूछ सकते हैं. Ma'am, I have a doubt. Yes, please. Ma'am, what is the difference between cohesion and consistency here? हाँ, consistency का मतलब है consistent. अगर कोई भी consistent होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? Regularity. Regularity. So regularity होना मतलब आप logical हो सकते हैं in some areas, but regularity का मतलब है आपकी भाषा जैसी चल रही है लेवल पे वैसी ही चल रही है कि नहीं. कहीं पता चला बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, कहीं पता चला बहुत इजी हो गई, कहीं पता चला आपके पैराग्राफ्स आपके यूनिफॉर्म नहीं चल रहे हैं, कहीं आइडियाज मिसप्लेस हो रहे हैं. So consistency means that if you have started with a certain style of writing, are you maintaining it throughout? Or are you becoming inconsistent in what you are expressing? अब जैसे आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स भी जब हम लिखते हैं तो जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं और अल्फा लेटर्स भी होते हैं. तो अब अगर आप न्यूमेरिकल से आप शुरू कर रहे हैं कि लेटर्स से शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं न्यूमेरिकल से शुरू कर दिया, कहीं आपने लेटर से शुरू कर दिया उन्हीं नंबर्स को, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट हो गया है ना. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. ये सब चीजें आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती हैं कि लिखने का पैटर्न आपका कैसा चल रहा है. और कोहेरेंस इज ओनली टॉकिंग अबाउट योर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. Consistency is seeing whether you are maintaining all this throughout or not. All right? Yes, ma'am. Is the difference clear between the two? Yes. Okay. Ma'am, Yes, sorry please. to interrupt you. I'm getting a bit confused between the words coherence and cohesion, ma'am. Okay, wonderful. Tomorrow And I'm going to be doing an example. So coherence क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अगर जैसे suppose if you're talking about suppose you're talking about writing about something, let me just say that the topic is solid waste management. Okay, that is the topic in municipal corporations in the cities, or how this is something related with environment.
and you are writing about आपने एक पैराग्राफ लिखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, बहुत अच्छे से लिखा वो पैराग्राफ. उसमें आपके sentences are logically correct sentences because it is the need of the hour. It is global warming is there and there are so many features because the cities are getting polluted and all those things you have written very, very nicely. So logically, the sentences are absolutely correct. When each sentence, जैसे each sentence is correct in its own way. Regard में वो sentence बिल्कुल logically correct है, grammatically correct है. But they are not connected to each other. मतलब जैसे आपका इंट्रो होता है तो इंट्रो में हम क्या लिखते हैं कि द सिटीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दीज डेज विद इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड दिस एंड दैट. आपने एक भूमिका बांध दी और फिर भूमिका के बाद आपने सडनली कुछ सोल्यूशन दे दिया. अब भूमिका को ही आगे इलैबोरेट करना है ना. पहले भूमिका की पृष्ठभूमि जब अच्छे से तैयार हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि भाई व्हाट आर द अदर फीचर्स वी आर सीइंग. तो ये जो पार्ट होता है कि हमने एक सेंटेंस को दूसरे से इंटरकनेक्ट करके हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, पूरा आपका पैराग्राफ इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है, पैराग्राफ से आर्टिकल इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है, ये कोहेजन है, ये ग्लू का काम करता है. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. हाँ, तो टुमारो वी आर बी डूइंग एन एग्जांपल. आज हम थोड़ा सा इसको खाली फीचर्स को समझ लेते हैं. कल मैं आपको Okay. एग्जांपल के साथ आई शो यू a written piece and then I'll tell you to look for coherence and cohesion, both the things in that. Okay? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Yeah, please keep asking questions. So, जैसे अब हम बेसिक्स ऑफ राइटिंग पे आते हैं तो बहुत ही बेसिक्स ऑफ राइटिंग में हम सबसे पहले अक्षर लेटर जो है उससे शुरू करते हैं. लेटर से क्या बनते हैं? शब्द. शब्द से क्या बनता है? शब्द के बाद क्या आता है? Sentence. Sentence. फ्रेज. फ्रेज है ना, जिनको Phrase. हम, हाँ, तो Phrase. फ्रेजेस आते हैं जो कि शब्दों का क्लस्टर होते हैं. फिर वाक्य, जैसे हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, तो वैसे ही इंग्लिश में है क्लॉज, क्लॉजेस. तो जो क्लॉजेस हैं वो कंप्लीट होंगे तो वो वाक्य कहलाएंगे और इनकम्प्लीट होंगे तो वो उपवाक्य कहलाएंगे. दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. So I'm just starting here. Letters are, these are all letters. ये थोड़े से letters हैं. पर letters से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि letters तो इधर उधर कहीं भी they can be all over the place and they will not prove anything. When those letters are brought together, then they form words. तो इन्हीं वर्ड्स से, इन्हीं लेटर्स से हमने एक ग्रुप बना दिया, एजुकेशन हो गया. अब खाली शब्द भी इधर उधर हैं तो हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है. तो हमें शब्दों को भी सामने सम्मिलित करना है, कुछ उनका ग्रुप बनाना है राइट वे में. सो इन द एजुकेशन सेक्टर, अब ये फ्रेज हो गया. फ्रेज क्या है? शब्दों का समूह इज अ फ्रेज. फ्रेज में आपका वर्ब और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, खाली एक शब्दों का समूह है, उसको हम फ्रेज कह सकते हैं. इन द मॉर्निंग, एट द कॉलेज गेट, while going to the library, as soon as I suppose as soon as, that is also a phrase. So ये सब शब्दों के खाली समूह हैं जिसमें कि आपकी सेंटेंस वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट भी कोई जरूरी नहीं है, खाली समूह. अब इन शब्दों के समूह से आपके बनेंगे उपवाक्य और वाक्य. तो उपवाक्य बनेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉजेस, और अगर कंप्लीट वाक्य बन गया तो दैट बिकम्स योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. इज दैट क्लियर? फ्रेजेस आए, फ्रेजेस से क्लॉजेस आए. क्लॉजेस आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो एक संपूर्ण वाक्य बन गया, और जो संपूर्ण वाक्य है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है? तो जैसे इन द एजुकेशन सेक्टर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज शी चेंज्ड मेनी लाइव्स. ये एक वाक्य है, इसमें क्या आ गए? फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या है इसमें?
many lives. So she changed many lives. And dependent clause में ये उपवाक्य है when she worked in the education sector. इसमें भी group of phrases हैं, पर इसमें वाक्य संपूर्ण नहीं है. तो हमने जब दोनों को जमा दिया, she changed many lives when she worked in the education sector, दो clauses को जमा दिया, it has become a complete sentence. और जब हमने ऐसे ही sentences जोड़े तो हमारा पैराग्राफ बन गया, और पैराग्राफ जब हमने कई जोड़ दिए तो हमारा आर्टिकल बन गया. एनी क्वेश्चंस? शब्दों से, अक्षर से हम आर्टिकल तक आ गए. तो इज दिस क्लियर एवरीथिंग? Clauses or independent clauses or dependent clauses we are going to be doing in detail. अभी हम उनको joining clauses भी करेंगे और phrases के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे. बाकी तो it's all very simple. So all okay? You can give a thumbs up in the chat section also so that I get to know. Okay. 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 Thank you so much. Thank you, because your response matters. Okay, so we go to the next section. Now we go to the sounds of English. Okay. अब sounds of English में जैसे मैंने कहा था, there are two sounds, vowels and consonants. Vowel sounds हमारी आवाज जो बिल्कुल बिना ऑब्स्ट्रक्शन के आ करके जो आ रही है वो वॉवल साउंड्स है. और कॉन्सोनेंट्स में हमारी हिंदी जो वर्णमाला है ना वो बहुत साइंटिफिक है. उसमें जो मतलब जैसे अगर तालु के शब्द हैं, अक्षर हैं, तो वो अलग हैं, जो पैलेट के हैं वो अलग हैं. बट एनीवेज, सो हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अभी इंग्लिश का समझते हैं. सो इसमें भी एक बड़ा मजेदार आपको मैजिक आपको लगेगा बिल्कुल ये कि why didn't we get to know about it earlier, because it's so interesting. So vowel sounds भी दो टाइप के होते हैं. ओके ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, because this is very interesting and this is extremely crucial to understand the structure of spelling. So vowel sounds, आपको पता है कि दो टाइप के vowel sounds होते हैं. Does anyone know? और किसी ने भी सुना है? अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं या लैंग्वेजेस से हैं तो आपने शायद सुना होगा कि vowel sounds two types के होते हैं. और otherwise also if you're taking an interest in language. Yes, ma'am. हाँ, yes. Sure. What are those two sounds? Pure vowels and diphthongs. Okay, pure vowels and diphthongs. Yes, but I'm talking about diphthongs. तो वो भी vowel sounds में आएंगे, but I'm talking about something else. Long vowels, short vowels. हाँ. So what? Short vowel and long vowel. So could you tell me the difference between short vowel and long vowel sound? Anyone? Like there are different features in that. Like when you are producing, like the lip movement, the shape of the lip, sometimes rounded, unrounded. Sometimes the lips are spread, and Oh. like the short and like the length. Like for example, E and E, long E and short E. More or less, I know in the linguistic part. Okay, now I'll tell you something very interesting. Okay, so vowels के हमारे नाम हैं A, E, I, O, U. These are the names of the vowels. And sounds of the vowels are different. जैसे A, apron में आ सकता है, apron में A. But apple में हम apple तो नहीं बोल रहे हैं ना, वहां पे apple आ गया. फादर में आ गया है ना. ये अलग अलग साउंड्स हो गए. और अगर आप और अहमदाबाद बोलेंगे तो साउंड आ गया. तो ए के अलग अलग साउंड्स हो गए. बट एप्रन में कैसा साउंड है? ए.
तो जो ये ए साउंड है, that is long vowel sound. जो ए का साउंड ए के जैसा है तो वो लॉन्ग वॉवल साउंड है. जैसे ई, ई का साउंड मी में ई, मेट में है कि नहीं है? राइट और That's what there you have two vowels, you know, which are combined. For example, as you're saying A, so A E, so we are making it A. So we call them diphthong. No, that you are saying, what you are saying is absolutely okay, but what I'm talking about is A as in apron. So A in apron is only single letter A. So when there are two vowels, suppose boat, O-A. So the first sound is there, boat. Yeah, suppose meat. So that is again E sound. So that is also a long sound. Yes. So that is the sound, the name of the vowel. जो वो sound होता है वो long sound होता है. Suppose if you're talking about rice, है ना? You can say rice and you can say kit. तो rice में I sound is long sound and kit में I sound is not long sound, so it becomes short sound. तो जहां आपको लॉन्ग साउंड पता है वो लॉन्ग वॉवल साउंड अगर आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं तो बाकी सब शॉर्ट वॉवल साउंड हो गए ना. दैट इज एज सिंपल एज दैट. अब क्यूट, क्यूट में यू का साउंड इज यू, सो दैट इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड. बट कट में यू का साउंड इज अ, सो दैट इज अ शॉर्ट वॉवल साउंड. आर यू गेटिंग दिस? सो लेट्स सी दिस. अब इसका इंटरेस्टिंग फीचर क्या है? जैसे ए, के, ए, that's a long vowel sound. E, T, I, buy, home, cute. ये सब आपके long sounds हो गए. And I, o, ये सब आपके short vowel sounds हो गए. So you should only know long vowel sounds. अब इसमें interesting चीज क्या है? Can anybody tell me something interesting here in this long vowel sound? कुछ है इसमें interesting? आपको मुझे बताना है इसमें interesting क्या है, दोनों में difference क्या है. There is an extra, there's a letter which is making all the difference. Can you find that letter? Can you spot that letter which is common in long vowels? Ma'am, it's E. Yes. हम केक को काके तो नहीं बोल रहे. It is cake E. That silent E changes the sound. So kit, K-I-T, kit, but K-I-T-E, kite. C-U-T, cat, but C-U-T-E, cute. So that silent E changes the sound of the letter. जो वहां पे वॉवल आ रहा है. H-O-M-E. E का क्या काम? होमे तो नहीं ना बोल रहे हैं मुझसे. We are saying home. तो उसने क्या किया E ने? It has changed the sound of O. Is थोड़ा सा क्लियर हुआ what we are talking about? Hello, थोड़ा सा क्लियर हुआ? Okay. Yes, ma'am. Okay, this is what I'm talking about. K-I-T, kit. That's a short vowel sound. और E लग के क्या हो गया? Can you say it? The sound has changed. Kite. Cup, cube. Pin, pine. Mad, mate. Bit, bite. Can, cane. Tub, tube. Cap, cape. Tap, tape.
can, pain. Is it clear, the long vowel sound and the short vowel sound? Ma'am, in the long vowel, E will always come at the end, towards the end of the word. No, not necessary. Not necessary that E will always be there, but usually when E is there at the end, the sound, yes. In every, like suppose it's a boat, O, A, so it's a double vowel. So double vowel mein O ka sound is O only. So there are other conditions also, but this is one of the conditions. Okay, Okay? ma'am. Yes. Okay? Yes. Okay. So always be careful. जैसे जब end में अगर E आ रहा है तो हम इसे किटे नहीं बोल सकते, पिने नहीं बोल सकते, माडे नहीं बोल सकते, बिटे नहीं बोल सकते. इसमें I का sound change हो रहा है. All right? Yes, does this make sense? Yes, ma'am. Yes? Okay. Okay. So we go to the next line. अब एक और बड़ी मजेदार चीज है. Sound of C. अब सी में आप कंफ्यूज होते होंगे कि एप्रिसिएशन में सी, एप्रिसिएशन जब बोलते हैं तो सी का साउंड सा है, और एप्लीकेशन बोलते हैं तो सी का साउंड का है. सिटी बोलते हैं तो सी का साउंड सा है, और साइकिल बोलते हैं तो सी का साउंड का है गया, एक जगह सा हो गया, एक जगह का हो गया. सो दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, राइट? करिकुलम है तो का है, कंप्यूटर है तो का है, बट सीमेंट है तो सा है. सो सी का ये बड़ा कंफ्यूजन है. सो डू यू वांट टू नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि सी कहाँ सा होता है और कहाँ का होता है? अगर आपको Yes, ma'am. जानना है तो प्लीज रेज. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं ये कंफ्यूजन. ये दिस इज अगेन टू डू विथ वॉवल्स. तो सी के बाद आप नोट कर सकते हैं, अगर आई और ई आ गया तो साउंड बिकम्स सा. सो एप्रिसिएशन में क्या हो रहा है? CIATION आ रहा है, तो एप्रिसिएशन. और एप्लीकेशन AOU आ गया अगर, तो साउंड हो गया का. तो यहां देखिए, EIY अगर आ गया तो साउंड है सा. इसीलिए साइकिल में सा साउंड आता है. सिटी, सेल, सेंटर, ब्रेस, ग्रेस, फेंस, माइस, ये सब जगह सा 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 साउंड आएगा. बट कैट, कॉट, कंप्यूटर, तो ये आपका सब का साउंड आएगा. That's a very very simple rule. Juice, CE. कहीं भी देखिए, सिंडर, सिंडरेला, साइक्लोन, बाइसिकल, लूसी, वॉइस, फियर, स्नीज, स्पीज, anywhere. So this is a general rule. Clear? बहुत ही सिंपल सा रूल है. IEY के बाद स साउंड और AOU के बाद का साउंड. ऑल राइट? तो इसलिए इस लॉजिक के कारण क्या होता है कि का जो लेटर है उससे आपके AOU वाले शब्द नहीं बनते. के काम करता है काइट का, के काम करता है केटल का, तो वहां पे के आ जाएगा, क्योंकि सी तो सा का काम कर रहा है ना, तो के वहां पे आता है. अदरवाइज के से आपके कैंगरू होगा, बट के ए आपको सुनाई नहीं देंगे, के ओ आपको नहीं सुनाई देंगे. किंग सुनाई देगा, KING, किंग. काइंड सुनाई देगा, KIND, और या फिर KN सुनाई देगा, नाइट, नाइफ. और सी से बाकी जो आपके AOU है वो वहां पे का काम कर रहा है, सी काम कर रहा है का. Is this clear? Very simple rule, nothing difficult, but it is very helpful. So whenever you are writing, you have to be very careful कि सी के बाद कौन सा वॉवल आ रहा है. अगर IE आ रहा है तो साउंड इज सा, और अगर AOU आ रहा है then sound is का.
As simple as that. All right. Can we go ahead? Yes? Okay. और similarly G और J, G और G का sound भी two types के आते हैं, कभी ग कभी ज, so that again becomes difficult. तो वही logic इधर भी है. I E Y sound is j and A O U sound is g. But उसमें exceptions होते हैं, जैसे जर्ल नहीं होता, it's girl. So there are exceptions, but largely it is really helpful if we know this. So G वाले goat, game, O, A, O, A, L, O, O, ये सब आपको U वाले जो letters दिखेंगे, ये सब गा sound है. और जहाँ पे I और E दिखेगा, you can look at the screen, so वहाँ पे j sound आएगा. Danger, age, bridge, orange, cage, gentle, gym, giant, तो similar. वैसे ही J से भी आपके words जो हैं वो jug होगा, JUG jug होगा, jog होगा, है ना, jack होगा, पर JI वाले कम होंगे, JE वाले कम होंगे, कम होते हैं, तो because G is doing the work there. All right. ये छोटी सी टिप है, but it is very helpful when it comes to the spelling and when it comes to reading also, because जब हमारी reading बढ़ जाती है, the speed बढ़ जाती है, फिर कोई confusion नहीं रहता, वो फटाफट आप आगे बढ़ सकते हैं. All right. Yes, ma'am. Yes. So now अभी तक हमने क्या किया? We started off with सबसे basic unit of sound is letters. Letters के बाद शब्द, शब्द के बाद phrase, phrase के बाद clause, clause के बाद independent clauses, then sentences, then phrases, sentences, then paragraphs, then article. वो हमने किया. उसके बाद हमने ये sounds of English पे हम आए, vowel और consonant sound के बीच में क्या difference है, we understood that. And then what is the difference between long vowel sound and short vowel sound, we also understood that. And now the difference between sa and ka, ja and ja. अब हम आ रहे हैं शब्दों की बेसिक यूनिट पर. लेटर्स तो समझ में आ गए हमको, ये लेटर्स हैं. अब लेटर्स से अब हमें शब्दों पे आना है. तो अब क्या करना है हमें, लेटर्स जब ज्वाइन होंगे तो एक साउंड बनाएंगे वो, है ना. तो उस साउंड को अब हम वी आर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट स्टेप एंड इट्स वेरी सिंपल. तो जैसे हमने कहा जैसे ये ऐसे कीजिए, आप लोग सब मेरे साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो यू विल रियली एंजॉय दिस. जैसे लॉजिक है ना, तो अब मुझे लॉजिक की में अगर मैं बोलूं कि कितने वॉवल साउंड्स हैं, तो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर देयर इन लॉजिक? एनीबडी? आपकी स्क्रीन पे है लॉजिक है, डॉजी है, इंजीनियर है, हाइजीन है, फ्रेजाइल है, कोई भी वर्ड है, हम बता सकते हैं इसमें वॉवल साउंड्स कितने हैं? 2. लॉजिक में कितने साउंड्स हैं? 2 sounds. 2. ओके. ओरिजिनल में कितने हैं? Both short as well as long vowel. नहीं, लॉन्ग वॉवल शॉर्ट वॉवल पे मत जाइए, बस मुझे ये बताइए Only वॉवल साउंड्स कितने हैं? 4. 4. 4. कैसे आपने कैसे जाना कि इसमें 4 साउंड्स है? Breaking them into units. कैसे ब्रेक किया आपने? The syllables. By their pronunciation, whatever. प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation. तो कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, तो अगर हमको एक ही यूनिफॉर्मिटी चाहिए एंड इफ यू वांट द सिमिलर आंसर, तो फिर क्या होगा, 3 होगा कि 4 होगा? 4. Probably few of them are counting I as 2 sounds No. or 1 sound. No. V and Original G. ki I'm talking about original. So how many sounds? Can you let me know कि भाई original में 4 हैं कि 3 हैं कि 2 हैं? एक आंसर बताइए कितने हैं?
Three, ma'am. 3? Yes. Is everyone okay with 3? Yes, ma'am. 3. 3? Okay. Yes, There are 3 vowel sounds in original. Okay. That is what you are saying. अब एक मैजिक करते हैं, एक ट्रिक करते हैं. ऐसे करिए अपना हाथ सब. I can't see you on screen, but I hope that you all are doing this. आप बोलिए ओरिजिनल और देखिए कि आपकी चिन कितनी बार ड्रॉप होती है. आप बोलिए और मुझे बताइए. ऐसे करिए और बोलिए ओ रे ची नल. ऐसे करके बताइए कितनी बार चिन नीचे गई. 4 हाँ 4 times. 4 टाइम्स. सबकी 4 टाइम्स गई. Everyone is saying 4 times or some are saying 3 times. Four, four, सब 4 कह रहे हैं. participants, you can on your video if want. हाँ आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपको मैडम के साथ इंटरेक्ट करना है, या तो अगर विजिबिलिटी दिखनी है कि आप लोग कैसे कर रहे हैं. मैडम हाँ. भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा. मतलब नेहा confusion आप नहीं होगा. मुझे बता सकते हैं 3 कैसे आया. आप वीडियो ऑन करके बता सकते हैं. नेहा बलजीत मैडम बताइए. आप ऑन करके बता सकते हैं ओरिजिनल में ऑडियो 4. ऑडियो बंद है आपका, म्यूट है. O re G null. हाँ So तो 4. 4 हुआ ना, Right. है ना. तो ये 4 टाइम्स जो चिन ड्रॉप हुई, these are the 4 syllables. So O, the sound of vowels in a sentence determines the number of syllables. So O itself is a vowel. तो एक O का sound हो गया. O, ri में RI आ गया, that's another vowel sound. Chi, another vowel sound. Null, another vowel sound. So O, ri, chi, null. 4 sounds are there. Okay, let's take up another word. This will be very easy for you. Logic. Try this and tell me how many vowel sounds. Logic. 2. Bas, perfect. Dodgy. Dodgy, how many sounds? Apology pe how many sounds? Apology. Anyone? Huh? 4. 4. 4. 4. 4. A पहला sound A है, then apology. 4 हो गए, है ना. तो ये हमें जानना जरूरी क्यों है. ये जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज वर्ड्स को आप जब डिवाइड करते हैं तो आप सिलेबल से डिवाइड नहीं कर सकते. सिलेबल के बाद डिवाइड कर सकते हैं. तो जैसे अगर आपको और मतलब आप सिलेबल आधा इधर तोड़ के फिर आपने कर दिया तो नहीं, आप उसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए and then you can divide. So that is an important role of word division. So we come to syllables. What is a syllable? A syllable is a word part and the basic unit of English rhythm. It can have, English words can have 1, 2, 3 or even more syllables. In the word drive way, there are 2 syllables and in the sentence drive him away there are 4. तो अब अगर आपको drive way को डिवाइड करना है तो हम drive और way ऐसे 2 डिवाइड कर सकते हैं. बीच में हाइफन कर सकते हैं वर्ड्स डिविजन के लिए, पर हम बीच में DRY, DRIV and hyphen nahi kar sakte. It will be incorrect. So that is very, very important. So these are the syllables that we just discussed. Spider. You can see it for yourself. Window. 2. Turtle. 2.
So these are the two syllables. Is it clear to everyone what are syllables? Syllables Yes, सबको clear हो गए? yes. Yes, ma'am. Yes. So, Preeti ma'am, we will take a break for 5 minutes here and then resume the session. Yes, ma'am. Yes. Yes. No, So yes. we have already done 1 hour. So we'll just take a quick break of 5 minutes and then resume the session after 5 minutes. And you can be ready with your questions. So see you after 5 minutes. Don't log off. Thank you so much. Yes, thank you, ma'am. Friends, meeting को leave मत करिए. Just take break for 5 minutes and come back. And we are doing syllables and we are because syllables are the basic units. बिल्कुल उसी से आगे spellings are formed. So that is why it's important to understand it. It is also it is also important to understand with respect to word division. All right. So I'm now starting with this. Yes. Can you see this? We've already done this. Yes, ma'am. Hello. Are we there? Yes. Okay. So, some very important spelling rules. Have you ever wondered कि ये English में कुछ spelling के rules होते भी है कि their words are just randomly formed and somewhere there are double letters and somewhere there are single letters and all that confusion. So, questions आते हैं कभी किसी को भी कि spelling के कुछ rules होते होंगे कि नहीं होते होंगे? Anyone? Or are you clear with spelling always? You instinctively know how could this word be spelled, or how could this word be, how is this word formed? Anyone, please, you can share in your chat box. Yeah. Anyone? Spelling में confusion होते हैं कि नहीं होते हैं? Please let me know. नहीं होते हैं. अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होते हैं. अच्छा, आप होते हैं क्या? कंफ्यूजन होते हैं. डबल लेटर्स कहाँ आ रहे हैं, सिंगल लेटर्स कहाँ आ रहे हैं, है ना? कंफ्यूजन होते हैं ना? हाँ मैम, हाँ मैम. थोड़ा सा I इसको order being reversed. हाँ E order reversed. हाँ, E वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. E के लिए भी एक रूल है और वो रूल ये है कि हमेशा ही होता है. जैसे बिलीव, फील, थीफ, चीफ में हमेशा होगा ऑलवेज. बट अगर सी आ गया then it becomes EI. That is the rule. So we will just see. So आपको क्या याद रखना है? You can take a picture of this maybe slide और आप इसको अगर याद रख लेंगे तो आपके बहुत सारे confusion clear हो जाएंगे. So these are the 5 basic rules. And the first one is the floss rule. तो फ्लॉस रूल अब जैसे नाम ही बता रहा है, मैं I'll just explain each one in detail थोड़ा सा. Then there is doubling rule, there is rabbit rule, the dropping rule and the changing rule. So what is the floss rule? Floss rule में आपको जैसे सुनाई दे रहा है कि FLS है ना, S की जगह कभी कभी Z भी आता है. तो गानों को क्या सुनाई दे रहा है फ्लॉस में? F सुनाई दे रहा है, L सुनाई दे रहा है, S और Z. अगर ये आपके एंड में आ रहे हैं and it is one syllable word, then the last letter is always doubled. As simple as that. अगर जैसे puff, it's a single syllable और end किस पे हो रहा है? F पे. तो puff, F will be doubled. अब जैसे nil is again a single syllable. L पे खत्म हो रहा है तो L will be doubled. Doll, single syllable,
L will be doubled. Sell, drill, miss, boss, less, guess, buzz, jazz, fuzz. ये double letters हो जाएंगे, सब नहीं होंगे. If it is milk, then MILK नहीं होगा. It is stuck नहीं होगा. It is a different combination then. But अगर FLS आ रहा है तो last letter is double. That is one rule. The second rule is one syllable or one consonant. तो आपका जैसे run है, run एक simple सा word है, छोटा सा word है run, 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 है ना, एक short syllable word. इसमें consonant है, एक vowel है, एक consonant है. बट खाली रन से तो नहीं चलता है. रन से रनर भी बन जाएगा, रन से रनिंग भी बन जाएगा, रन से रनी भी बन जाएगा. अब हमने जब रन को आगे बढ़ाना है, इसमें कोई सफिक्स लगाना है, एंड इज ऑलवेज डबल्ड. तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन होता है? बहुत सारे बच्चे एंड बहुत सारे एडल्ट्स राइटिंग को भी WRITTING लिखते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. क्योंकि WRITE ई से एंड हो रहा है तो TTING हो ही नहीं सकता. इट इज इनकरेक्ट. सो उसके लिए कंडीशन ये, बैटिंग BAT से TTING हो सकता है, क्योंकि अगेन इट्स अ शॉर्ट सिलेबल वर्ड. बैट, बैटिंग. बिग, बिगर. सन, सनी. फन, फनी. रन, रनी. हॉट, हॉटर. इन सब में डबल लेटर हो जाएगा. That is a rule. One syllable word, one final consonant, one short vowel. It's a rule. Double the final consonant आपके suffix से पहले. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So Yes, पहला ma'am. वाला क्या था? Floss. And the second is 111. One syllable, one final consonant, and one short vowel. Double the last consonant. Always, always, always. Hop, hopping. है ना? Fat, fatter. तो ये आपका रूल है. अब आपका एक और, कभी कभी बीच में भी डबल लेटर्स आ जाते हैं. कैसे आ जाते हैं? क्योंकि अगेन इफ यू सी दो शॉर्ट वॉवल्स के बीच में कॉन्सोनेंट आ गया है, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है. रैबिट, रिबन, टनल, हैपन, पपेट, कॉपर, पैरेट, कैरेट. क्योंकि दो शॉर्ट वॉवल्स के बीच में, तो इसको हम टन नल, हैपन, पपेट, कॉपर, कॉपर, पैरेट, कैरेट. तो ये बीच वाला जो आपका कॉन्सोनेंट है वो हो गया डबल. ये देखिए सिलेबल से स्पेलिंग्स कैसे कनेक्टेड हैं. अगर इंग्लिश भाषा को इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. ओके, so this I've just explained. Acha, this is extremely important, extremely important. क्योंकि sometimes actually what I see around me is कि बहुत बार, because such basics are not clear, unknowingly mistakes are made because the clarity is missing. So that is why let's be very confident, so that when we are teaching others, we are giving them the right knowledge. So hop agar khali hai, HOP, hop. And if I have to add ING to this, it will become HOPPING. ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग?
Yes, ma'am. Yes, it will become yes, ma'am. HOPPING. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And hope अगर है तो HOPE, it is ending with a vowel. फिर इसके बाद मुझे ING अगर ऐड करना है तो मैं दो vowels तो नहीं कर सकती ना. तो what I'll do is I'll remove this E and add ING. So it becomes HOPING. Exactly as in writing. Writing में भी यही होता है कि WRITE, E को हटा दीजिए, ING लगा दीजिए. अब इसमें क्या हुआ? Because it is ending in a vowel. अब yawn, yawn में दो consonants में end हो रहा है, तो I don't have to change anything. I can just add ING. yawn, ING. ठीक है. अब sleep में भी कुछ नहीं मुझे करना है, because it is ending in a consonant. I can just add ING. और spill में already जो हमने first rule किया था ना, floss rule, so it is ending in L, so L is already doubled, so I don't have to double it again. I can just add ING. So I only add double the consonant जब हमारा first वाला rule होता है hop. One short syllable, one consonant, and आपका one vowel, one वाला जो rule है वो अगर आ रहा है तो आप hopping कर दीजिए, उसको double कर दीजिए, otherwise you do not. ये बहुत clarity होना बहुत जरूरी है, because अगर ये clarity नहीं होती है then sometimes we are depending on autocorrect, और autocorrect में भी आजकल मतलब कभी-कभी we are not very confident, है ना? So why not, gain that confidence and be very sure of what we are doing. So C का आपने पूछा था C के बाद EI और IE. So it is always I before E, thief, pen, belief, page, eight, always I before E. पर अगर C आ गया तो it becomes CEI, perceive, conceit, receive. और exceptions कहाँ है? ये weird is always weird is WEIRD, और either है, leisure है, यहाँ पे ये exceptions है, otherwise it's I. Does this bring some clarity? I hope it does. Do you have any Yes, ma'am. questions or doubts? Yes? Yes? तो इसी पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रैक्टिस है, जैसे हमने किया one vowel one consonant, swimming में डबल हो गया, hit में डबल हो गया, get में डबल हो गया, क्योंकि ये one syllable words है. पर अगर e आ रहा है तो e को हटा दीजिए. coming में COMING, lose में LOSING, living में LIVING, और अगर कोई भी और है खाली ending with consonant, then you just add ING. This is crucial. Okay? अब ये आप लोगों के लिए है. आप मुझे फटाफट, ये थोड़े से कॉमन ग्रीक रूट्स हैं, आप मुझे इससे वर्ड्स बताइए फटाफट. You can tell. Aquarium. हाँ, absolutely. Second. Bibliography. हाँ, yes. Bibliography. Chronology. Chronological. Geographical. Geography. हाँ, हाँ, Photography. Photosynthesis. हाँ, हाँ, Audio. Audio. Audible. हाँ, Audio. Circular. Circle. Circle. हाँ, Circle. Jurisdiction. हाँ, Manual. Manipulative. हाँ. Package. पैसिफाई, पैसिफाई, पीस है ना, पैस यहाँ पे पैक. हाँ, बिल्कुल सही. तो ये जैसे आपने मुझे अगर ज्योग्राफी बताया तो ग्राफ, अब देखिए वर्ड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है. एक्वेरियम आपने बताया, एक्वा से वाटर, वाटर से एक्वेरियम, है ना. बिब्लियोग्राफी, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग. जैसे ही हम कहते हैं ग्राफ तो वो ग्राफ इज राइटिंग. तो बिब्लियोग्राफी तो बुक्स के बारे में लिखना. क्रोनोलॉजी, लॉजी मीन्स साइंस, तो बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, कोई भी जूलॉजी, जूलॉजी है, तो कोई भी लॉजी मीन्स साइंस,
किसी भी चीज का जो साइंटिफिक स्टडी है, तो क्रोनोलॉजी दैट इज द टाइम का साइंस. ज्योग्राफी अगेन ग्राफ आपने बोला, तो द स्टडी ऑफ अर्थ. फोटोग्राफ, तो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो माने लाइट है ना, फोटोसिंथेसिस हमने किया है, तो फोटो इज लाइट. लाइट में व्हाट यू आर कैप्चरिंग बिकम्स योर फोटोग्राफ. ऑडियो, अब ऑडी इज टू हियर, ऑडियो, बट ऑडियो से और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं? ऑडिशन, ऑडिटोरियम, ऑडियंस, है ना. और ऐसे ही एक और वर्ड है स्पेक्ट. स्पेक्ट मीन्स टू सी. तो ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? कैन एनीबडी टेल मी? तो ऑडियंस, expectation is, I think, one way. हाँ, Only spectators are, it's like one way. They can only see. spectators only watch. स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट मीन्स टू सी. तो जैसे मेरे स्पेक्टिकल्स हैं, आप अगर हम चश्मा पहन रहे हैं तो वो भी स्पेक्ट से आ रहे हैं, बिकॉज दे हेल्प अस सी बेटर. और जब क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहां पे स्पेक्टेटर्स हैं, बिकॉज दे आर म्यूट, दे आर जस्ट वॉचिंग, है ना. म्यूट माने जो कमेंट्री चल रही है वो अलग चल रही है, बट ग्राउंड पे तो खाली प्लेयर्स, खाली आपका गेम खेल रहे हैं. बट अगर आप एक ऑडिटोरियम में जाते हैं, तो ऑडिटोरियम में वहां पे एक ड्रामा हो रहा है या कॉन्सर्ट हो रहा है, तो जहां पे हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. सो दैट बिकम्स, देन वी बिकम ऑडियंस, where we are listening also and watching also, and where we are only watching, we are spectators. All right, so spect से see आता है, तो see से हम खाली देखते हैं. और ऑडियो में, ऑडियंस में हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑडियो, हियरिंग एंड वाचिंग. सो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट, अब मैन्यू इज हैंड एंड स्क्रिप्ट इज राइटिंग. सो अगर आपका कुछ हैंड रिटन काम है तो आप उसको, मतलब जो आप स्टोरीज का पहले लिखेंगे, सो दैट बिकम्स योर मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, सो ऐसा इंटरेस्टिंग आते हैं वर्ड्स जो उनका साइंस पीछे से हम जानते हैं. So this becomes more interesting. अब जैसे port है एक word which means to carry. I'm just sharing this with everyone because ये vocabulary बड़ी फिर interesting हो जाती है. Port means to carry. Deport, send somebody out. Export, carry out of the country. Import, bring something into the country. Portable, something which can be easily carried. Portage, जो route है जिसके ऊपर boats and supplies are carried over land from one lake to another, that becomes your portage. Porter, a person who carries your luggage is a porter. पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो क्या है? इट इज अ केस फॉर कैरिंग लूज पेपर्स. Report, so a collection of writing that carries information to be shared again with someone new. So that is carrying information, your report. Report. Okay, support, to carry the weight of something, and transport, to carry something from one place to another. So how interesting it is कि one word से, carry से, there are so many other words connected. वैसे ही transport, transporter, इसमें अगर हम transport पे आ गए तो अब reporter. Now what is a reporter doing? Reporter is carrying the information of something which has taken place. Reported, you carried information to, somebody else. So this is ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग. तो हर से फिर कितने कितने वर्ड्स बन जाएंगे? एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टेड, इंपोर्टर, इंपोर्टेड. सो आपका vocabulary, whenever you are reading something, अगर if you connect it with the root word, तो आपका vocabulary will really multiply in a very short span of time. So isn't this interesting? Yes or no? Interesting, ma'am. Yes, how words are connected. Yes. Definitely. So now Yes. we are going to do a short quiz on spelling. ठीक है? It's very simple, but we will just do this exercise on spelling. So you can just tell me which one is correct.
Option 2. Second one is correct. Second one. Then Third one. Second one, third one is third correct. one. In Okay. second, the third one. And third one. Third first one, the one. third Third option. one. And fourth, first one. The Fourth third में option. first one. Sorry, fourth, second one. Fourth Second में one. second. Second May one. there is a little confusion because the words both are correct. एक stationery का मतलब correct जो हम बोल रहे हैं pens papers वाला और दूसरा stationery का मतलब है stationed. जैसे railway station पे the train is stationed, so that is not moving. So that is ARY. That is स्थिर, still. And ERY is ये जो आपकी दुकान में जो स्टेशनरी जो हम कॉलेज में यूज करते हैं राइटिंग पर्पसेस के लिए दैट इज ERY द फर्स्ट वन एंड ARY मींस नॉट मूविंग ओके नेक्स्ट फिफ्थ में Second one. सेकंड वन Second. Second one. सिक्स्थ में Third one. Third one. थर्ड वन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये वाला करते हुए अब जैसे डिफाइन डेफिनेटली डिफाइन मतलब पक्का definitely means pakka definition matlab something which defines something so NITION definition ki bhi spelling okay then which is correct here Second one. Second. second Second. one yes Second. and this First one. First one. first one C hai to EI okay सो अब ये हमने थोड़ी सी स्पेलिंग करी थोड़े से स्पेलिंग रूल्स किए अब हम वर्ड डिवीजन पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था सिलेबल्स के टाइम पे वी कैन जस्ट लुक एट दिस सो व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्ड डिवीजन व्हाट डू वी यूज अ हाइफन अब हम पंक्चुएशंस पे आ गए हैं सो पंक्चुएशंस का सबसे पहले वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग वेयर हाइफन इज यूज्ड और हाइफन के बारे में वी आर गोइंग टू बी डूइंग लिटिल मोर इन डिटेल पर अभी आपका ये रूल्स फॉर वर्ड डिवीजन सो वन सिलेबल वर्ड डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स डू नॉट डिवाइड अगर आपको वर्ड डिवाइड करना है तो प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में करिए और सिलेबल्स को मत डिवाइड कीजिए सिलेबल्स के वन सिलेबल को तो बिल्कुल ही नहीं डिवाइड करना है सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स व्हिच विल ब्रिंग मोर पावर इनटू व्हाट यू आर राइटिंग सो सिलेबल्स में जैसे ये दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देयर इज वन वॉवेल साउंड अभी हम सिलेबल्स पे भी वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज सो दिस इज जस्ट द रिविजन बिफोर दैट Does anyone have any doubt about syllables? हमने क्या किया अभी जैसे बास्केट में 2 syllables and computer में computer 3 syllables. 3 syllables. How many syllables are there in wonderful? Wonderful में how many syllables? 3. Wonder can be considered as one. No. It cannot be. You try this and see. One, One full. 3. 3. As simple as that. One, full. So 3 syllables. So are we ready to do an exercise on syllables? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. let's do. You have to tell me which one is correct. There are 3 options. E. C. Option C. Teacher is already C. given. Little से शुरू करना है हमको. Little D. आप सबके you can write the options. Please write down the options. Then I'll give you 5 minutes. फिर हम options को consider करेंगे. Okay. So, आप ऐसे लिखेंगे तो I'll not get to know. You are writing the answers, but then I'll not be able to match them. 1B. Okay.
1B. हाँ, आपने ऐसे करके देखा, little, ऐसे करके देखिए, then you will get to know better. हम कैसे बोल रहे हैं? Little. Okay. So let's have the answers now. Has everyone done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the first one is T. C. Option C. C. The second one, A. 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 Is the correct option. The third one, B. D. D for Delhi. Ma. Yeah, ma'am. Ni. D. D. है ना? Okay. Yes, ma'am. Second, Yes. fourth wala, A. 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 Fifth wala, A. A. Absolutely. Sixth, Power. A. See, it may be C, again, ma'am. power. Is आप A. It may be C. power नहीं करेंगे, we will say power. Okay, the A1. A1. अच्छा, A1. Okay, ma'am. Brother में B. 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 Yes. Science में Science. C. C. C में C. I और E अलग अलग नहीं हो सकता ना, because sound is one only. I and E का psi is the Okay, sound, so it's right? B. It But may ma'am, be then C. in B there is no syllable in the second. B. In नहीं, B there is C, no E. syllable. D. Ma'am, in second syllable there will not be any vowel sound. No. Psi, science, E and I. हाँ, जो end में E आ रहा है ना, science. हाँ. That E, science. हम science ऐसे नहीं बोलते ना, हम science, sound is there at the end, right? Yes. So ninth one, D. D1, until. D. 10th, C. B. 10th, B. C. No, C. B. 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 Enough. B. ओके, थोड़ा सा आइडिया हुआ. अब जैसे हम अगर सपोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जैसे आपको पावर को ब्रेक करना है, तो पावर ऐसे आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रदर ऐसे ब्रेक करेंगे, डिविजन अगर करना है. until, this is okay, enough, that is okay. but अगर और किसी तरह से जो ऑप्शंस है वैसे किया तो it will be incorrect. हालांकि कंप्यूटर will automatically tell you, but if we are doing some, अगर आप लिख रहे हैं तो we should know. all right. money. अब जैसे आप मनी को देखिए, 3 मनी, दिस इज ओके. बट अगर आप सी कर दिया तो गलत हो जाएगा, बी कर दिया तो गलत हो जाएगा, ए कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना? Similarly, Ma'am, under also if you see, can I ask a D is question, correct, please? but B अगर आप और क्वेश्चन ले सकते हैं मैम इसके ऊपर? हाँ, और 4-5 इसके क्वेश्चन. हाँ, थोड़ा सा. Ma'am, can I अच्छा, ask a question? आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं इस पे, बिल्कुल कर सकते हैं. हम अभी जैसे I have a ये, question. आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? हाँ मैम. Ma'am, I have a question. हाँ, yes please. Ma'am, my question is what is the relevance of these syllables in research? Like, how are we हाँ, going to use these syllables in research? रिसर्च में Writing. अगेन, बिकॉज इफ यू आर डूइंग वर्ड डिविजन, आपने उसमें देखा होगा ना, आपका थीसिस में ये यूनिट 5 में देयर इज अ टॉपिक एंड द टॉपिक इज वर्ड डिविजन. हैव यू सीन द सिलेबस? Yes, ma'am. यस. सो Yes, ma'am. जब आप वर्ड्स को डिवाइड करते हैं, सो देयर इज अ वेरी, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रूल कि आप वर्ड डिविजन सिलेबल्स को ब्रेक नहीं कर सकते. There is a way how you divide words. So that is why these examples are being taken. So suppose the word is like I said here, suppose let's take up any word, enough, yeah, until. So there is a rule behind it. Why are we dividing the words the way we are doing? There is a hyphen which is used to divide the words. You do not divide proper nouns.
You do not divide single syllable words. When their word has multiple syllables, how are you dividing the words? There is a method behind it, and that is what we are understanding through this syllabus. Does this make sense? Yes, ma'am. Yes? Okay. Yeah. So like this is the punctuation that is used for word division is hyphen. And it joins. Now, what is the difference between hyphen and dash? Where is hyphen used and where is dash used? It's a very, very simple question, but there is a difference. So we will just see through this, where is hyphen used and where is a dash used. अब हमने hyphenated words के बारे में तो we have been studying since childhood, right? So whenever you are dividing the words, वो hyphen कैसे आता है? There's a logic behind that hyphen also, ना? So it will be या तो आपका two proper words are being used, then compound words बन गए तो आपका वो hyphenated word हो गया. That is one. Sometimes आपके numerical आपका कोई बीच में आ गया, then again 19th century novelist अगर करने हैं तो again वहाँ पे you will use a hyphen. All right. So hyphen in numbers. अब आपका words का तो हमने कर लिया, अब hyphen numbers में भी आता है. तो जैसे compound words हैं वैसे ही compound numbers भी हैं, तो वहां पे भी hyphen आएगा, right? So this is very, very simple, very simple. It is so simple that it is easily ignored. And that is why sometimes we are doing certain things in a certain manner, but we do not know why it is being done. So that is why this understanding of hyphens. So these are all compound words where we are using the hyphen, and now we are coming to compound numbers. Again, you can use a hyphen there. If you are writing fractions, then of course between the numerator and the denominator you will use a hyphen. And suppose अब जैसे 35 आवर वर्किंग वीक है तो अगेन ये जो आपके सारे साइंस है ये हाइफन है. 100 मीटर स्प्रिंट है तो हाइफन है. तो वेयर ऑल हाइफन इज यूज्ड. कहाँ आपको हाइफन नहीं यूज करना है ये भी पता होना चाहिए. कहाँ कहाँ यूज करना है ये तो पता है, कहाँ नहीं यूज करना है. सिंगल लेटर और द लेटर्स दैट स्टैंड अलोन, तो वो वहां पे तो हम हाइफन यूज ही नहीं कर सकते. जैसे एसेस, इन्होंने दे हैव गिवन दिस एग्जांपल, serves more aces than anyone I know. I'm sure you must have seen students doing this mistake because nobody told them. And they, अगर word divide करना है तो ऐसे आपके पास आ सकते हैं sentences. So you have to give them the logical explanation why this is not acceptable. क्योंकि word division के rules हैं. और बच्चे भी अगर आपको लिख रहे हैं या research articles, if somebody you are reading somewhere, then you should also be able to identify. So this is incorrect. आप proper nouns और proper adjectives को नहीं divide कर सकते. Titler नहीं, wrong. अगर already hyphenated word है तो उसको आप hyphen के बाद ही break करेंगे, उसको बीच में और hyphen नहीं लगा सकते. These are some of the rules, which again, like I said, we may be following, but we may not be aware. So just revision. All right. Should I just revise ये hyphen wala? Where is hyphen used? For compound words. These are joined two or more words, compound words हो गए. जब numbers आपके sentence में आ गए तो वहां पे भी hyphen आ रहा है. ठीक है? Yes, sir, you were saying something? Hello? Then hyphens in numbers आएगा, compound numbers में आएगा, written fractions में आएगा, और अगर आपका
कंपाउंड वर्ड्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो अगेन यू विल यूज अ हाइफन टू डिफरेंशिएट. Okay, where do you not use hyphens? That is important. And proper nouns and proper adjectives and hyphenated word को आप नहीं करेंगे. All right, so word division, is it clear to everyone? I think we have done. So syllables we did with reference to word division. I think Baljeet ma'am, who asked this question? Hello. Are we ready to get to the next step? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So word division, syllables, सब clear हो गया आपको? Yes. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. अब हम थोड़े से foreign words करेंगे. तो foreign words आपको मैं बहुत general वाले कर रहे हैं हम लोग, and you have to आपको वो लर्न करने पड़ेंगे because they are going to be there for your examination also, and these are very commonly used words. So हमारी vocabulary को better ही बनाएंगे, and I'm sure you would, maybe there are some words which you already know. So let's start. पहले मुझे ये बताइए, when you are not feeling well in the morning, you get up with a headache, or sometimes you are the heat is too much and you suddenly start feeling giddy. So what is the word for that? अब ऐसा चक्कर आने लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, हाँ? Exhausted. Exhausted और मुझे Drowsy. हाँ, Morning Drowsy. sickness. Tired. टायर्ड. एन से क्या वर्ड होता है? ऐसे Nauseated. हाँ हाँ, क्या वर्ड है वो? Nauseated. हाँ, nausea. Nausea ना, आई एम Nausea. फीलिंग वेरी नॉशियस, मुझे बड़ा नॉशिया जैसा लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग सिक. तो इसी से ये एक फॉरेन वर्ड से आया है, एंड इट मीन्स टू अ सिकनिंग डिग्री. तो नॉशिया को याद रखना है, और जब भी अब देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. अगर कोई एंडलेसली अपने बारे में बोलता जा रहा है to a sickening degree, then we can just say, oh my god, he talked at no time he scored the winning run. So beautifully put into a sentence, and then it explains the meaning so well. So ad nauseam means to a sickening degree, because nausea hai, nausea means sick. So ad nauseam to a sickening degree, and it is a Latin word. All right, that is our first foreign word. So we are just going to be doing a couple of them, not a couple, about 10 of them, 10, 15 of them, or फिर we will have a quiz about it. All right, so please be very attentive, नहीं तो फिर याद, इसी में आपको याद हो जाएंगे. So the first word is ad nauseam. The second is, everyone knows this, I'm sure. Did you know bona fide is a foreign word? हमको bona fide certificate चाहिए होता है कॉलेज से हमेशा, कि we want a bona fide certificate. Bona fide is a foreign word, and bona fide means, what does it mean bona fide? Bona fide का meaning है genuine. So जब भी हमें bona fide certificate चाहिए होता है, it just shows that you are a genuine, मतलब students को अगर चाहिए तो genuine student of the college. So it's a foreign word. देखिए, bon voyage तो हम सबको बोलते हैं जब कोई जर्नी पे जाता है कि have a nice trip. And bona fide means genuine. So Emma's teacher was a bona fide expert in European history. I wanted to go to the college because I needed a bona fide certificate for engineering, for admission to an engineering college or something like that. So it means genuine. You know, kitni baar commonly we use this, but we are not aware. Anybody from law side here? Law or commerce, may these words are very commonly used.
So carte blanche. So we have done 3 words till now. We have done ad nauseam, we did bon voyage, and we did bona fide. Now these are the 2 new words we are doing. Yes, Vipul sir, do you want to say something? I was just thinking about carte blanche. It is, I think, somewhere related to freedom. You were thinking about carte blanche because it is related with Related to freedom somewhere. unlimited authority. Unlimited Yes. authority. Yeah, exactly. Yes. Does blank mean blank? Means a blank check, something like that? Blank charter or something like Sir, your voice is not clear. I can't hear. that? Sorry, that's because of the the wireless that I'm using. I don't think that can be helped. Abhijit sir, I think there's some kind of disturbance from your end because the voice is not coming clear. Yes, it is. Preeti ma'am, can you hear? No, ma'am, it is little bit breaking. Hannah, little Yes. bit, there's little disturbance. Okay, so maybe you can write your question, then maybe I'll be able to address that because the audio seems to be a little disturbed. Okay, so it is unlimited authority, absolute freedom, sir. What you were, Vipul sir was talking about freedom, it's complete authority. So, as the owner of the store, Mr. Williamson had carte blanche regarding what merchandise to sell. And caveat emptor is, I think, a very, very important word in today's scenario where the customer is the king. So let the buyer be aware. That is caveat emptor. Now we come to masses means group. Whenever large crowds. So this is mass means in a large group, and fait accompli is established fact. So we have done some words till now. We will quickly revise. Ad nauseam, bon voyage, bona fide, carte blanche, caveat emptor, and mass and fait accompli is established fact. Something which is already proved. Okay. Now this word, the first word, can anybody pronounce it, please? What's the first word? It is again a very commonly used word. Is it fox pass? It is spelled as F-A-U-X-P-S, but it is pronounced as faux pas. Okay. Faux pas. And whenever we have made a big blunder in front of others, then it is a big faux pas. Suppose it's a very formal party and somebody has reached in casuals, then it's a big faux pas. Or somebody at the time of, in a big large gathering, something has taken place which is not needed. So that becomes a big faux pas. But very, very interesting word. So Elizabeth realized too late that not attending Susan's party was a faux pas. I realized that I had made a faux pas when I reached a formal gathering in my casual clothes. So that was a big faux pas. Okay? Ipso facto, that is by the fact itself. So a teacher, ipso facto, is in charge of his or her class. That is why teachers, felicitators today, facilitators today, I mean, they are called the managers of their classes. They are like not only managing the students, they are managing themselves, they are managing the resources, they are managing so many things. So, modus operandi, of course, we know. Method of operating. So, uh, everyone could be having a different modus operandi for writing the thesis, research paper. Persona non grata.
Persona is a person, non grata is non-acceptable. So persona non grata is a person who is just not acceptable, because somebody who is Sally was persona non grata in a club because she wouldn't follow the rules. Okay. Then prima donna is somebody who is very, very temperamental and conceited, who nobody likes, Miss Nose up in the air. And pro bono. Pro bono is again a very, very popular word, where it is charity done or donated without charge. So it is something for charity. Quid pro quo, something for something. And status quo, we know, existing condition. All right, so these are some of the words. I'll just repeat quickly, and we will have a short maybe recollection of words. So what was the first word? We all know, ad nauseum. Next, do you know what is coming next after this? Anybody? Bona fide. And Bon voyage. yes, Bon bon voyage and bona fide. Then C. It was A, B, C, D. It's coming in that order. So C, say there were two words. Carte blanche. Carte blanche and caviar tempter. Absolutely correct. Then after this, E, en masse and fait accompli. So en masse is in a large group, and fait accompli is from French, meaning established fact. Okay. Preeti ma'am, hello. Yes, ma'am. Today's session is till 4 or 5? Yes, ma'am. 4. It is till 4 today. Yes, ma'am. And from tomorrow and day after tomorrow, it will be until 5. Okay. So we will remember this, I hope. Faux pas. Do we remember this? Yeah. Yes, ipso facto, by the fact itself. And foreign words, modus operandi and persona non grata. Then prima donna, pro bono, quid pro quo, and status quo. So I'll just quickly revise what we have done till in this afternoon today, and you can ask me questions if you have any. All right. So, okay. So we will quickly revise and then it becomes clear. So we started with this. Is it all clear? Yes, ma'am. Yes? Okay. Explained this, all clear, I'm sure. The difference between coherence and cohesion, and this was here. We will be doing it in detail tomorrow. We are going to be doing clauses tomorrow. We will see how to join the clauses, and we will understand the comma, the semicolon, and the colon, everything in detail in the coming up sessions tomorrow and day after. So whatever we have done till now, if you have any questions today, we can just take up those questions. Then these were the basics of writings, letters, words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, and articles. Then we started with the sounds of English, the long vowel, the short vowels, and other vowels. Okay, long vowels and short vowels we did today. Do you remember this? Yes, ma'am. Yes. Then the sound of C, sa, and ka. Then the sound of G, ja, and J. Then we did syllables. Then we understood how to break syllables into two. Then we understood the spelling rules, the floss rule, the 1-1-1 rule, one syllable, one final consonant, and one middle short vowel, the rabbit rule, and these are the
rules how to add suffix to a word. You can please take the picture if you wish to. Then C, E, I or I, E, you have to read this. Huh? Yes? Okay, then ing, how do the words change when we are adding ing? Then some common word roots. This was all vocabulary section. This is again the root words. Then we did the spelling exercise. Then we understood word division and hyphen. So what are the rules, how to divide words, and syllables, how should, if syllables should be divided or not, then we should did this worksheet on syllables. Some more on hyphen and numbers, then foreign words. Do you have any questions? मैडम हाँ जी, मैडम ये फॉरेन वर्ड्स पर हमको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आपको कोई भी फॉरेन वर्ड का या तो मीनिंग दिया जा सकता है या फॉरेन वर्ड दिया जा सकता है, आपको उसका मीनिंग तो आना चाहिए. यस, ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है. जो भी हम लोग इसमें कर रहे हैं, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस से ही डायरेक्टली है, जो भी हम कर रहे हैं, है ना? Ma'am, can you Yes. share this presentation because we don't have these foreign words. Yes, ma'am. Can you share this presentation? Yes, I will be sharing the presentation, of course. So, Okay, Preeti ma'am knows Yes, more it is. about it. Madam, it is already uploaded in our Genomio website. But ma'am, these foreign words are not there in that presentation. No, foreign words are there. Yes, They are yes. not there? They are there, ma'am. Or you can get it in today's recording itself. अभी जो recording चल रही है ना, उसी में आपको मिल जाएगा. Okay, ma'am. Okay. Right. So they'll be easily accessible to you. And so I'm putting this on, I'm just revising it. So it will not be difficult. There are just 10 or 15 of them. So any other question? मैम मुझे एक थोड़ा I आपके found syllable a little bit difficult. Can you suggest of an easy way to understand syllables actually? Okay. अच्छा सर, आपका नाम क्या है? लेट्स डू मुनिंद्रा सर, है ना? मुनिंद्रा सर के नाम में कितने सिलेबल्स हैं? आई डोंट नो, मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो मैं कैसे पता करूंगी? तो आई ओनली डू दिस, मुनिंद्रा. तो अब मैंने कितनी बार चिन्ह ऐसे किया? मुनिंद्रा, 3 times. 3 syllables. Sandhya ma'am, I just saw the name here. So Sandhya ma'am, मुझे नहीं मालूम है उनका स्पेलिंग क्या है. I don't know. तो I just do this. Sun 1 time, Dhya 2 times. तो Sandhya. अब दिव्या, my name is Divya. You don't know मेरे नाम की स्पेलिंग, तो अब कैसे करना है? दिव्या. तो इससे क्या होता है कि वर्ड्स बनाने में बिकम्स वेरी इजी. अब गेदाम, जैसे मेरे सामने नाम आ रहा है, तो गेदाम, तो मतलब मुझे कैसे ये हेल्प करता है? जी, अब जैसे गेदाम, आई डोंट नो द स्पेलिंग, बट मुझे पता है कि जी साउंड से वैसे तो आई ई के बाद आता है, बट लाइक आई सेड देयर आर एक्सेप्शन. सो जी इज देयर फॉर श्योर. गेदाम, सो जी ई एक वॉवल वहां आएगा. P और M का sound is already there, and there is going to be one more vowel in between. So गेदा बन गया मेरा word, है ना? संध्या, तो और अन साउंड तो मुझे पता है, बीच में एक वॉवल आ गया, सन, एंड देन ध्या, DHYA. सो मेरा वर्ड बन गया. सो इसलिए ये सिलेबल्स हमको हेल्प करता है. जैसे अब किसी का भी आप नाम ले लीजिए, जैसे एम्प्टर. अब एम्प्टर का मुझे, या अनलिमिटेड की मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, तो अब व्हाट डू? आई डू दिस. अनलिमिटेड साउंड पता है, अनलिमिटेड, तो
तो अब अन का UN हो गया, limited, तो मेरी स्पेलिंग बन गई ना उससे. Is it easier now, sir, to understand? Little bit, ma'am, but I'll try to do some more exercises, and if there's any difficulty, I'll get back to you then. Yes, you can look for more exercises on internet, and you can. I'm so happy that you're finding it interesting, and this will help in understanding the language better. We will see if we have time. Then we'll definitely do more exercises on this. Yes. That will be very helpful, ma'am. Thank you. Yes, definitely. Let us complete the other things, and then if we get time, we'll do that for sure. Okay. So, any other question? Okay. I think. Yes. Okay. Yeah. So, faux pas, ipso facto, अब जैसे modus operandi, अब these are all, suppose new words are coming up और वो हमारे को suddenly we are not familiar, so always easier to break it up into syllables and then try to do it on your own and then see if it is falling the right way. So it's very, very interesting. Okay, so with this, we have come to the end of the session for the day. And thank you so much. If you have any doubts, anything to share, any feedback, then please, we have 2-3 minutes for that. Preeti ma'am? यस मैम, यस. मुझे पार्टिसिपेंट से एक पूछना है कि जो मराठी और हिंदी बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हैं और जिनका रिसर्च मराठी लैंग्वेज में है, आप लोगों को कुछ दिक्कतें होगी तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये यूनिट सबके लिए कंपलसरी है. इस यूनिट में से 8 क्वेश्चंस आएंगे फायनल एग्जाम में. तो तुम्हाला काही डाऊट असतील तर प्लीज मॅडमला विचारून घ्या, कारण की या युनिटवरती बरेच वेळा ज्यांचा मराठीमध्ये रिसर्च आहे त्यांना फार डिफिकल्टीज येतात. तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिए, क्योंकि मैंने देखा अभी जैसे लास्ट 2 आवर्स से मैं देख रही हूँ वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स आर इंटरैक्टिव. तो आप लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं. मैडम आपने भी शायद थोड़ा अभी नोटिस किया होगा ये बैच में लिमिटेड में संध्या मैडम है, बलजीत मैम और 1-2 विपुल सर, यही लोग बात कर रहे हैं, अभिजीत सर. बाकी लोग अभी मुझे अटेंडेंस लेने के बाद पता चलेगा कि वो सोए हैं कि जगे हुए हैं. तो बट आप लोग ही डिफिकल्टीज फेस करेंगे 28 को. तो अभी आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, अपने रनिंग नोट्स आप लोगों को निकालने हैं, क्योंकि जो पीपीटीज रहती है ना वो मैंने प्रीवियस वाली पीपीटीज अपलोड करी है, कोई भी रिसोर्स पर्सन की रहे, और हर सेशन में ये रिसोर्स पर्सन कुछ ना कुछ तो भी नए अपडेट्स उसमें लाते जाते हैं. तो वो अपडेट्स अपने प्रीवियस पीपीटीज में नहीं हो सकती है, तो आपको खुद के भी रनिंग नोट्स निकालने हैं लेक्चर वाइज. तो मुझे ऐसा लगता है की आप लोगों ने इंटरॅक्टिव्ह रहना चाहिए. स्पेसिफिकली या युनिटसाठी मी म्हणते आहे ज्यांचं रिसर्च मराठीमध्ये आहे, हिंदीमध्ये आहे, त्यांना हा युनिट डिफिकल्ट जातो नेहमी. तर तुम्ही नको तुमचे डाउट्स वेळेवरतीच क्लिअर करा. ओके, सो थँक्यू सो मच मॅडम फॉर टुडेज सेशन. वी विल मीट टुमॉरो at 2 PM. 2 to 3 कल सेशन. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you ma'am. so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank Preeti you, ma'am. ma'am. so much, ma'am. Thank you. Nice Thank you session. all of you all tomorrow. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. बाय. Thank you. फ्रेंड्स, ma'am. आज का फर्स्ट डे है, इसलिए अपन आज थोड़ा जल्दी फ्री हो रहे हैं. कल से अपने सारे सेशंस 5 बजे तक रहेंगे. ठीक है, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं आज की. अनम्यूट करके आप अपनी प्रेजेंटी दीजिए. यस दिव्या मैम. यस मैं अभी Yeah. यस. Okay. Thank you so Thank you. much. Please Thank you, take ma'am. care. Bye bye. बाय मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much. बाय. करण कुमार चौधरी, Yes, ma'am. अमोल पितळे, Present, ma'am. नीलम काळंबे, नीलम मैडम, सी नीलम, नीलम मैडम प्लीज अपनी अटेंडेंस दीजिए. यस ओके, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है. विपुल सर, Present, ma'am. सतीश सर, Yes, ma'am. पंकज मटे, पंकज सर,
Absentee लागला. Present, ma'am. Yes, yes. पंकज, दोन पंकज सर आहेत. पंकज मंडपे. नाही, पंकज मंडपेंचं ठीक आहे, मी तुमची अटेंडन्स लावली. पंकज माटे or Matte. See, he is there in the meeting. I can see his name, but कुछ attendance नहीं दे रहे, so I will mark him as absent. पंकज माटे sir. चंद्रमणि बोवते sir. Present, ma'am. Yeah. मुनिंद्रा मट्टे. Yes, ma'am. गुरुदास बाल्की sir. Yes, ma'am. गोविंद राठौड़ sir. Yes, ma'am. सतीश राठौड़. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राजेंद्र मोडगरे sir. Yes, ma'am. Yeah. उत्तरा तागड़े. Yes, ma'am. ज्ञानेश्वर माठनकर. Present, ma'am. नेहा आफरीन. मिस्टर गोपाल समृद्धवार. Present, ma'am. मिस माधुरी बोतारे. Present, ma'am. मिस्टर पंकज, हो गई आपकी अटेंडेंस. मिस्टर अमोल नंदे. Okay, ma'am. Thank you. Present, ma'am. मिस जुई. Present, ma'am. Present, ma'am. या मिस मोनिका खटे. Yes, ma'am. मिस माधुरी चौधरी. Present, ma'am. मिस्टर राजेंद्र धनगेर. Yes, ma'am. मिस्टर कमलाकर नवघरे. Yes, ma'am. मिस्टर अंकुश देवसंत. मिस्टर अंकुश Hello. जी. हाँ, yes, ma'am. अंकुश देवसंत. या मिस्टर अभिजीत. Yes, ma'am. मिस संध्या पट्टिक मैम. Yes, ma'am. मिस बलजीत. Yes, ma'am. मिसेस सीमा मैम. सीमा चांडक. मिसेस सीमा चांडक मैम, प्लीज गिव योर अटेंडेंस. मिस दिव्या दुबे. I'm present, ma'am. या सोनल गेडा. Present, ma'am. Yes. Okay. मॅडम माझी प्रेझेंटी नाही आली. काय नाव? सतीश कर्णाचे सर घेतली ना अटेंडेंस सतीश कर्णाचे. घेतली का? यस. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ Thank you. पे रुकते हैं, कल मिलेंगे 10:15 बजे. आई विल शेयर द लिंक इन द आफ्टर Okay, thank you, सम ma'am. टाइम. ठीक है. Thank you, ma'am. ओके. Thank you so much, ma'am. आज जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आप उसको प्लीज